Hello and welcome back to the channel everyone. This is Karan Sharma and you're watching Gizbot. Today we are going to install the Let's Track GPS tracker, and here we have the concerned person with us, and he will let us know what are the benefits of this tracker and what is the installation process. So भैया इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे ये इंस्टॉल होता है? सर ये इंशाल्लाह कि आपको वायरिंग अब कटनी होगी। सॉकेट्स निकालेंगे हम लोग, सॉकेट्स नीट फिटिंग करेंगे। आपको जीपीएस ट्रैकर है ये, आप की ऑफ करने से भी आपको पता चल जाएगा, ट्रैकिंग पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा, ट्रैकिंग पता चल जाएगा। हाँ। आपको की ऑफ करने से किधर है गाड़ी, किधर लोकेशन पे खड़ी रहती है गाड़ी, आप किधर भी फोन में ऑफ कर सकते हैं, फोन गाड़ी ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी ऑफ कर ऑल ओवर इंडिया किधर से ऑफ कर सकते हैं गाड़ी हाँ। का फोन। और बैटरी चार्ज होना है शायद गाड़ी का, हाँ। और की ऑफ कर देंगे। आप कोई लेके अच्छा सपोज मैं अभी बैंगलोर में मेरा गाड़ी है, हाँ। और मैं वहाँ पे कोलकाता में बैठा हूँ, हाँ। तो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा गाड़ी कहीं और जा रहा है मेरे लोकेशन से इधर उधर, तो मैं वहाँ बैठे बैठे किधर ऑफ कर सकते हैं, इंजन ऑफ कर सकता इंजन हूँ। ऑफ कर सकते हो, फिर स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा फिर और स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप मोबाइल में ऑन नहीं करेंगे जब तक स्टार्ट नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, these are the specification and benefits of this tracker. So let's get started without wasting any time. Let's install this device and check how good it performs. So here is the device and it shows that it started now, and I'm trying to connect it with the application. Let's see. So the installation process is completed, and now this guy will explain us how to install this Let's Track GPS tracker. So भैया आपने कैसे इंस्टॉल किया, क्या क्या मतलब कैसे कनेक्शन होता है इसका? सर एक की वायर आता है इसको, और एक इग्निशन वायर, एक डायरेक्ट मैन आएगा आपको, एक इग्निशन मैन आएगा, और इंजन कट ऑफ है, कटआउट आएगा। उसको क्या करना है, इसका जो गाड़ी का की मैन आता है ना, की का जो वायर आता है जो इंजन का पावर लेता है, उसको एक वायर कनेक्ट करना। और एक आगे वाले के एक वायर कनेक्ट करना, आगे वाला जो पिन रहता है ना उसको एक वायर कनेक्ट करना, और एक डायरेक्ट मैन, एक ग्राउंडिंग जो माइनस देते हैं हम लोग, अर्थिंग उतना ऐसा सिंपल फिटिंग है इसका। हाँ, और आपको ये सिंपल फिटिंग और डिवाइस अंदर फिट करना चाहिए, उतना नीट से डिवाइस होता है सर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिसेंट ग्राउंडिंग जो माइनस है ना वो परफेक्ट देना पड़ेगा सर, उतना ही। उसके बाद मोबाइल के साथ अपना डिवाइस कनेक्ट करके उसको चला सकते हैं। So this was the process of how to install this device on your vehicle. So let's pair the device with the app and see how it performs. So now we are going to pair the device with the app. So first open the app, Let's Track. So you will find the device number on the rear side of the box. So now it's added. So you can see the device is added to the application, and now you can see the actual position of the bike where it's standing. So you can see now the phone is connected with the device, and now I am going to turn off the engine from this application. So here we go, cut power, and see the engine is off, and now the ignition is on, but I am unable to turn on the engine because of the GPS tracking system. So to get it started I have to again start the engine, and you can see the ignition is started. So these are the features. You can see where your vehicle is parked. Jayanagar East, Jayanagar First. It will give you the proper location. And let's go for a spin and see how good it gives you the live tracking.
So this is the entire process of installing Let's Track GPS tracking on your vehicle, and I have also gone for a small spin to check whether the GPS is working perfectly or not. I have seen a 10-second of lag, but although the machine performs really good, the tracking device is really good. I've also tested the power cut feature, in which you can directly cut the power from your bike from the app. So that's all for today. If you enjoyed this video, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel, and also press that bell icon so that you won't miss any update from Gizbot. This is Karan Sharma signing off.